Now let's take some unsolved examples from exercise. Exercise 9.6. So first problem is q minus p plus x minus y is equal to 0. This is the given partial differential equation. So now this equation can be expressed in the form of f1 xp is equal to f2 yq. Okay, f1 xp is equal to f2 yq. How? कैसे लिखना है? So q minus p plus x minus y equal to 0. So we have to separate the values of x and b on one side and value containing y, the equation, the terms containing y and q on other side. So we keep this minus p plus x on this side, and this y is shifted to another side here, and this minus q, and equating this each term with a. So it becomes minus px plus x is equal to a, and y minus q is equal to a. Okay, so from this we can find the value of p. So this p can be written as minus p of is equal to a minus x, or plus p is equal to x minus a. Similarly, here also this minus q is written as a minus y, or this small q can be written as y minus a. Okay, so this, now we have got the values of p and q, and we substitute this values, where these values in dz is equal to p dx plus q dy. So this dz as it is, the value of p is x minus a into dx, and plus the value of q is y minus a into dy. Okay, so you can integrate it with the same expression as x minus a and y minus a, or you can separate this x dx minus a dx plus y dy minus a dy, like this. Okay, so as you wish, both methods you can apply there. Okay, now integrate. So integration of dz is equal to integration of x dx minus integration of a dx, a is taken outside, plus integration of y dy, and minus a into integration of dy, plus some constant we will add here, and that is c. Whenever we integrate, we have to add constant term, arbitrary constant there. Okay, so this is z is equal to integration of x dx is x square by 2 minus ax plus y square by 2 minus ay plus c, or you can write this z is equal to x square plus y square upon 2 minus of a times x plus y minus of a times x plus y, and what, plus c. Okay, so this was the problem, unsolved problem from exercise 9.6. First problem I have taken here. Okay, now next problem we solve. So
Next problem we solve. Yes, second problem. Second problem. So what is there in second problem? So this is under root of p plus under root of q is equal to 2x. Under root of p plus under root of q is equal to 2x. So this expression can be written as under root of p minus 2x is equal to minus of under root q. Minus of under root q. Okay. So now we equate this each term with a. Therefore, we got under root of p minus 2x is equal to a, and minus of under root q is equal to a. Is equal to a. So before taking square, we must bring this 2x here. So it becomes a plus 2x, and this remains as under root of q is equal to minus of a. Under root of q is equal to minus of a. Okay. Now we need the value of p and q, small p and small q. So and here is under root, यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, तो उसको रिमूव कर देंगे वहां पे बाय टेकिंग स्क्वायर. सो वेन एवर वी स्क्वायर इट बिकम्स p इज इक्वल टू a plus 2x whole square. A plus 2x whole square, and this is q is equal to only a square plus a square. Now we substitute these values in dz is equal to p dx plus q dy. So what it becomes, dz is equal to p. What's the value of p? A plus 2x square dx. A plus 2x whole square dx, and plus q की value क्या है? Q is nothing but the a square dy. And now we integrate it. Now we integrate. So on integrating, integration of dz is equal to integration of a plus 2x whole square dx plus integration of a square is taken outside, and this is dy plus some constant c, constant of integration c. Okay, so integration of dz is z, and integration of this a plus 2x is a plus 2x whole cube upon 3 into 2. Upon 3 into 2. ठीक है, this 3 is this जो कि डिनोमिनेटर में आता है, और इसका जो डिफरेंशियल है 2x का 2, ये यहाँ पे आया है. ठीक है, सो प्लस a square integration of dy is y plus c. Okay, so this can be written as z is equal to 1 by 6 into a plus 2x whole cube plus a square y plus c, and this is the final expression. Okay, now next one more problem we take, and then we stop here. ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं. So next example is, this is example number 2, example number 3. One more example we take from unsolved exercise. So that example is p square minus q square is equal to x minus y. P square minus q square is equal to x minus y. So first you separate this expression in terms of f1 xp. एक साइड में x और p के टर्म्स ले लेने हैं, और दूसरे साइड में बचे हुए y और q के टर्म्स ले लेने हैं. ठीक है, so now how to convert this expression? This p square minus x, ये x इधर आएगा, and it is q square minus y. Q square minus y, and we consider this each term is equal to a. So we get p square minus x is equal to a, and
q square minus y is equal to a. So from this term, we can write p square is equal to a plus x, and q square is equal to a plus y, a plus y. So when we take its square root, it becomes under root of a plus x, and it is q square. So we write only q, and it is under root of a plus y. And now we substitute this values in expression. And dz is equal to p dx plus q dy. So this becomes dz is equal to under root of a plus x, under root of a plus x dx plus under root of a plus y dy. And now we integrate. Now we integrate. So on integrating, we get integration of dz is equal to integration of under root a plus x dx and plus integration of under root a plus y dy. So this plus constant c. It is very important to add constant every time whenever we integrate. Okay, so integration of dz is z, and its integration abhi nikala tha humne. What is this? This 2 by 3 so this is 2 by 3 into a plus x whole raised to power 3 by 2 whole raised to power 3 by 2 plus 2 by 3 into what a plus y whole raised to power 3 by 2 and plus c. So this is the required solution. Required solution. Okay, so I hope this topic is clear to all. सबको समझ में आ गया है क्या करना है. All the 4 methods we have completed here. When the function contains only the term with p and q, z p and q. ठीक है, ये जो थर्ड मेथड था, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हमने किए हैं. Now we start. Now we move to our next method, and that is Charpit's method. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि Charpit's method है क्या. What is Charpit's method? ठीक है, अभी सबसे पहले तो हमने इसके पहले 4 मेथड्स किए हैं. ठीक है, सबसे पहले 4 मेथड्स किए हैं, तो उसमें जो मेथड 1 था या फिर टाइप 1 था. ठीक है, मेथड 1, और यू कैन से इट इज टाइप 1. ठीक है, सो विच टाइप वी सॉल्व्ड हियर द इक्वेशन कंटेनिंग ओनली टर्म्स विथ टर्म्स p एंड q. ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्म था वो ये था. नाउ व्हाट वाज द सेकंड फॉर्म और सेकंड मेथड? What was the second method? Your expression was in the form of z is equal to px plus qy plus f of pq. This was the method number 2. Now next we solve method number 3. So now what is in the method 3? Your expression was in the form of z, p and q equal to 0. The equation containing contains only the terms z, p and q. And last fourth method was your expression was separated in the form of xp, and on other side it was containing yq. ठीक है, सो इतने 4 मेथड्स हमने सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी. Now let's see what is meant by Charpit's method. So Charpit's method is what, whenever your equation contains all the terms means what? It contains x, it contains y, it will contain z, it will contain p and it will contain q. सारे terms.
ठीक है, all the terms. So this is the standard form. यहाँ पे हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म किए हैं. अब यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जब वो इक्वेशन में सारे के सारे टर्म्स प्रेजेंट रहेंगे. x भी रहेगा वहां पे, y भी रहेगा, z भी रहेगा, p भी रहेगा और q भी रहेगा. ऑल द टर्म्स विल प्रेजेंट देयर. ठीक है, समझ में आया. एंड दिस मेथड, जो भी मेथड अभी हम करने वाले हैं, दिस मेथड इज नोन एज चारपिट्स मेथड. चारपिट्स मेथड, उसके कुछ कुछ एक्सप्रेशंस है, कुछ इक्वेशंस है जो आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, यू विल हैव टू रिमेम्बर दैट some standard form equations are there. ठीक है, so now let's check what is meant by Charpit's method. ठीक है, so I give here heading Charpit's method, and it is very important method. very important. अगर आप अभी MSc के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम अगर CT अगर आप देना चाहते हैं, तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स वॉट एवर वी आर टेकिंग, नो दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, so what is Charpit's method? Charpit's method is the general method, is the general method for solving partial differential equation, partial differential equation with two independent variables, with two independent variables. Two independent variables means what? Your independent variables are x and y. Okay, so now suppose let the general partial differential equation, general partial differential equation be given in this form, means it will contains x, it will contain y, z, p and q is equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सारे के सारे टर्म्स प्रेजेंट है, x भी है, y भी है, z है, p है, q है. ठीक है, नाउ since z is dependent variable, no, and it depends on x and y. It depends on x and y. जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ये मेथड सॉल्व की जाती है. ठीक है, ओनली x and y, whenever where z depends on x and y, and we have this dz is equal to dou z by dou x. This previously also we have used dou z upon dou y into dy, or this can be written as dz is equal to p into dx plus q into dy. I give this expression number 2. I'm giving this expression numbers, these are very important. ठीक है, ये expression number को ऐसे ही रहने देना है. ठीक है, the main thing in Charpit's method, the main thing in Charpit's method is to find another relation between the variables x, y, z, p and q. Means we will find another relation, and we denote that relation by
some phi. Let the relation be some phi of x, y, z, p, q is equal to 0. So this is expression number 3. And we solve this expression number 1 and expression number 3 to get the values of small p and q. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन तैयार करेंगे. we will form that expression, ठीक है, which also contains some x, y, z and p and q. and as this is the new expression, इसको नाम दे दिया है phi. ठीक है, अब ये भी एक्सप्रेशन में सारे टर्म्स है, x है, y है, z है, p है, q है. तो ये दोनों एक्सप्रेशन को, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन था दैट वाज गिवन एक्सप्रेशन, एंड दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन जो हमने बनाया है. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे किसके लिए? फॉर द वैल्यूज ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q, एंड वी विल यूज दिस वैल्यू इन एक्सप्रेशन नंबर 2 टू फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है, और फिर हम बाद में क्या करेंगे? यूज द वैल्यूज स्मॉल p एंड q, जैसे कि इसके पहले इसमें हमने किया था, यूजिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल p एंड q इन एक्सप्रेशन नंबर 2 टू गेट द सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए p और q की वैल्यू हम एक्सप्रेशन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे. एंड नाउ वी राइट द चारपिट्स इक्वेशन. सबसे पहले तो इक्वेशन हम लिखेंगे. ठीक है, सो इट्स सब्सिडरी इक्वेशन. मैंने जैसे कि बोला था आपको कुछ इक्वेशंस आपको याद करने हैं, तो ये है एक्सप्रेशंस जो आपको याद करने हैं. ठीक है, dy अपॉन माइनस ऑफ डो एफ बाई डो क्यू और इक्वल टू dz अपॉन माइनस p इंटू डो एफ बाई डो p माइनस q इंटू डो एफ बाई डो q is equal to dp upon dou f by dou x plus p into dou f by dou z and equal to dq upon dou f upon dou y plus q into dou f upon dou z, and last one the d phi upon 0. Okay, so either you write this in this form or you can write the same expression in another form, that is dx upon minus fp, or where what is fp? It is the partial differential of f with respect to p. ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा ध्यान में रखने के लिए. so minus fq and this is dz upon minus p fp minus q fq. ठीक है, जो लोअर सफिक्स में है दैट रिप्रेजेंट डिफरेंशियल. ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल. नाउ dp अपॉन fx प्लस pfz एंड इक्वल टू dq अपॉन fy प्लस qfz इज इक्वल टू d phi upon 0. Okay, so this is this standard what expression. ठीक है, ये जो phi हम बनाएंगे ये कोई भी दो एक्सप्रेशन सॉल्व करके बनाएंगे. we will compare, remember what Lagrange's linear partial differential equation क्या था वो हमारा? p plus q is equal to r, नो? फिर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे. ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ के आओ.
इसको हम कल करते हैं।